Breaking news coming in. We've accessed the video. Look at that video. Okay, I think we should just remove the DV because the interception can be seen at 2 seconds. Let's put that video. If you're putting the video out, we'll remove the DV. Okay, you can see that at 2 seconds. There you go on the top of your screen. That's the interception, a video that was shared, captured on CCTV in Amritsar. The timing is at the bottom of the screen, 1:03 on the 8th of April, 8th of May 2025. Look at that. That's a small spark that you see there. A dot that you see on the screen at about 2 seconds. We will highlight that, just circle that as well. You can see that that is the interception. From our sources in Amritsar, Gursimran has also accessed this video from his contacts. You can see that on top of the screen. Keep looking at the top of your screen. You will see a spark. That is the spark. 7-second video from Amritsar. There's a spark. That spark is of the interception of the Pakistani projectile. From our sources, we have picked up. This is 2 seconds. You can see the interception is at 2 seconds. It comes in a flash and it disappears. Now that is the interception video captured from a CCTV at 1:03 a.m. 2 minutes after air raid sirens were activated along the international border. In Gurdaspur, Amritsar, there was complete electricity shut down at that particular time. And that interception that you see here on your screen right now, that spark that you see over the skies of Amritsar is when a Pakistani projectile was intercepted. Once again, we don't have the official word. Okay, we have Republic Bharat teams on the spot. Let's go across live. मैं आपको सीधा पहले ग्राउंड की तस्वीर दिखाता हूं। मैं दूसरी जगह पर आ गया हूं जहां पर यहीं पड़ा हुआ है मलबा। मैं पहले जेठूवाल गांव में था, वहां पर एक जो है जगह नहीं थी। यहां आप मलबा आप लाइव देख सकते हैं। ये जो मलबा है, मिसाइल का मलबा पड़ा हुआ है। रात को देखा था। ये गांव कौन सा है भाजी? मक्खन मंडी गांव। यहाँ पर भी सेम वही चीज हुई थी, क्योंकि जो मिसाइल गिरी है आसपास के इलाकों में जो है वैसे ही आवाज सुनी गई। आप एक बार पहले पूरा पैन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो है 6 फीट के आसपास की है। ये मिसाइल कहाँ की है, कैसी है, इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं है, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। गाँव वालों ने, चश्मदीदों ने क्या देखा है, जरा इनसे बात करता हूँ। मेरे साथ वो चश्मदीद हैं जिन्होंने ये देखा और पुलिस को फोन किया। इन्हीं के इन्फॉर्मेशन पर यहाँ पर पंजाब पुलिस आई थी। क्या है जरा ये बताता हूं भाई साहब, क्या देखा आपने? के जो रॉकेट लॉन्चर के जो पीस है वो मेरे घर के छत के ऊपर, वो जो आसपास के गांव के छत के ऊपर वो उसके टुकड़े मिले, वहां पर चिप लगी हुई थी। तो मैंने सुबह 6 बजे पुलिस को कॉल की और पुलिस आई और वो जो जितने पुर्जे थे वो सारी रिकवर करके लेगी। तो सुबह से ही हमारे गाँव में, अमृतसर में वो दहशत का माहौल बना हुआ है। ये सुबह मतलब आप ही ने इन्फॉर्म किया था ना? हाँ, मैंने। और कहाँ मलबा गिरा, कितने रेंज में गिरा हुआ, कितने किलोमीटर के रेंज में? ऐसा है कि एक तो मलबा जहाँ जे मक्खन मंडी गांव है, और मक्खन मंडी गांव है, हाँ मक्खन मंडी गांव है, जंडियाला ब्लॉक में पड़ता है। और इसके पास ही 200 मीटर दूर जेठूवाल गांव है जो अटारी हल्के में पड़ता है। तो सुबह से दहशत का माहौल है। मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रक्षा मंत्री को और इंटेलिजेंस को मेरी बेनती है कि हमारे जो गांव हैं उसमें अगर ये हमला हो जाता तो लाशों के ढेर जहां पर बिछ जाने थे। तो मेरी भारत सरकार को और आर्मी को बेनती है कि हमारी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। ठीक है बाजी। तो और वैसे रात को इस गाँव में भी ब्लैकआउट हुआ था? सर रात को भी ब्लैकआउट हुआ था और ब्लैकआउट में पूरा सहयोग किया था। पूरा सहयोग दे रहे गाँव वाले? पूरा गाँव वाले पूरा पूरी बत्ती गुल हो जाती है? हाँ पूरी। क्या देखा आपने? रात को 1 बजे के करीब ब्लास्ट हुए जी। सबसे पहले जो 1 बजे ब्लास्ट हुआ, उसके बाद हम घर की छत पे चढ़े। छत पे जब गए तो एक के बाद एक 4-5 धमाके लगातार हुए। 1:10 पे जो है ना बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उसके बाद पूरे गांव की जो छत है ना उसके ऊपर कंकर पत्थर के टाइप जो है ना वो मलबा गिरा था। ठीक है, वो रात को तो पता नहीं लगा कि क्या गिरा है क्या नहीं। उसके डर की वजह से हम नीचे उतर गए भी किसी को लग न जाए। सुबह जब छत पे चढ़ के देखा तो मलबा गिरा था, कंकर थे, उसका वो पार्ट थे मटेरियल के, वो हमने इकट्ठा करा और आसपास के जो हमारे पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म किया। वो आके वो लेके गए। तो एक बाद सुबह 7 बजे के करीब पता चला कि गांव के बाहर जो खेतों में है ना एक 7 फीट का पीस पड़ा है इस मिसाइल का। वो भी वो अपने कमो थाना पड़ता है, वहाँ की पुलिस आकर रिकवर करके लेके गई। उसके बारे में अभी पता लगा। अभी इधर जो मिसाइल का एक टुकड़ा गिरा उसके बारे में मौके पे आए हैं, पब्लिक को पीछे हटा रहे हैं। मक्खन मंडी गाँव है।
ये मिला है। हो सकता है कि आसपास के इलाकों में कोई दूसरा जो मलबा है वो भी गिरा हो, लेकिन फिलहाल ये पूरे मलबे की तस्वीर है। यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। अभी फिलहाल आदेश दिया गया है कि ग्रामीण इसको छुए ना, कोई इसको टच ना करे, इससे दूर रखा जाए। और जब इंचार्ज आएंगे फिर इसका जो आगे के आदेश होंगे उसके अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। Okay, look at that. That's the point of interception. The spark on the left of your screen is the point of interception. More videos that we are accessing from over the skies of Amritsar. And on the right of your screen, the Pakistani dud that was intercepted by India. Different projectiles. Some reports saying that it was a Chinese missile, a PL-15. Now, that's another report altogether. Not speculating as of now. We will wait for an official word. New video on your screen that will show the interception mid-skies, over the skies of Amritsar. Look at that. Over the skies of Amritsar. Let's play that video. There is that interception there. On the top right of your screens, that spark that comes for a flash of a second. Comes in a flash. There is a little bit of a... there's not much of an audio because it's a CCTV. But you can see the spark on the top right confirming that there was an interception. Different videos that have been accessed showing that a Pakistani projectile was intercepted by our missile systems. And an incoming projectile was intercepted. Shawan broke that story for us, and we are getting more details. Okay, that's the video. That's the point of interception. We've paused the video at that particular point. That is the point of interception. Then when we successfully intercepted the Pakistani missile, the make of the missile is not clear. But there are different reports, open source inputs on social media, viral inputs on how Pakistan tried to send a Chinese projectile, and the Chinese projectile was intercepted. Now that's speculation once again, so we will not get into that. What we know so far, there was a Pakistan projectile that was sent from the Pakistani side towards India, which was intercepted by Indian missile systems. Now that is the point of interception that you see over the skies of Amritsar. Gursimran is back with me right now. Gursimran, it appears from different sources that it may not have been just one projectile, number one. Number two, we don't know whether it was a Chinese missile. We don't know. We will wait for an official word on that. But there were several, if not one, because we're looking at different videos that are now being accessed from over the skies of Amritsar, of the interception. Yes, Niranjan. Yes, Niranjan, Republic has access to videos. The first video that is of 7 seconds. In the second second, the 2-second second, there is an interception. It is at the timing at the dead of the night, at the 1 a.m., 3 minutes and the 16 seconds to be very specific when the interception took place. It was for the nanoseconds that it was intercepted, and then it was brought down, the projectile that was sent from across the border into the Indian territory, possibly to target some high-profile, high-value asset that was there in the Indian territory, because Punjab, Amritsar has some of the key assets of the security forces. So that could be probable target, because we have seen that Pakistani agencies have always been targeting the locations of the Indian Army and the security forces in Amritsar, and there have been apprehension of two operatives, the Pakistani intelligence operative that was sending the information of the vital installations to the Pakistan. And now this interception comes at a time when we have carried out the precision strikes deep inside the Pakistani territory in the Bhawalpur and other bases of the terror groups. And this interception of the Pakistani projectile, the origin of which, or the manufacturer of which, is still unknown, but it was a Pakistani projectile that was fired from across the border and has been caught in various CCTVs. We have now got the access to another one CCTV in which, in the top right corner, it can be seen that how this projectile being fired from across the border is intercepted and then brought down. Stay with me, because Major Samarpal Tur is also joining us. Major Tur, we don't know the make of the missile. There are different reports, some in social media claiming that there was a PL-15, missile that was also used. Of course, it doesn't look anything like this. This is a different projectile. This is a different missile that has been found in Punjab. Now, we don't know the make. We are waiting for an official word. But there are also reports of perhaps Pakistan using these Chinese missiles. Some of them appear to be duds. Pakistan missiles are duds. What are you picking up about the nature of projectiles that were used? I'm not calling it a missile, but nature of projectiles that were used by Pakistan. Shawan, as you see the visuals of these missiles, they're short-range missiles. They're very small in size.
So definitely the propellant and the fuel that they carry in them is very limited. So it is very, surprising that, these have fallen in open fields. So definitely they have miscalculated either the distance oblique, the jamming systems that we have and the air defense capabilities, probably that have hampered in terms of its signal and to its target. And therefore, because of that, because of spoofing and spectrum hopping, the missile's communication system also gets hampered. So probably it lost its target on its way, and what resulted would be that the finishing of its fuel propellant, and then it fell onto the ground as a dud. So you see, these are being collected right now. They will be taken to. Be with me. I'm cutting across to Republic Bharat Major Tour. We have a live report from that location. Cutting across live, Republic Bharat. फॉर्म किया वक्त वही था जो हम आपको बता रहे हैं। 1:09 से लेकर 1:12 के बीच में करीब 7 धमाके बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने उन धमाकों की आवाज सुनी। आपको बताऊं कि यहां से कुछ ही दूरी पर एक गांव है जेठूवाल, जहां से मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई थी और ग्रामीणों से बातचीत भी की थी। वहां पर भी एक टुकड़ा गिरा था। वो टुकड़ा लोग बता रहे हैं कि वो 6 से 7 फुट का था। उसको उठा के जो पंजाब पुलिस है, जो आर्मी की टीम है, वो अपने साथ ले गई है। लेकिन अभी जहां मैं खड़ा हूं, ये मक्खनविंडी गांव है। एक बार पैन करके आकाश दिखाइए। ये पूरा करीब 3 फीट के आसपास का जो ये रॉकेट का टुकड़ा है, ये Okay, that's a report. That's a report that's coming in. That's one of the projectiles. From what I picked up, Major Tour, he's saying it's not one, but at least 6 to 7 sounds were heard. 6 to 7 explosions were heard over Amritsar, over the skies of Amritsar. Let's go back to the 2 windows, please. Show the moment of interception and show the projectile that was intercepted by our missile systems. आप देखेंगे कि 3 फीट के पास की मिसाइल है। 3 फीट के पास की मिसाइल है और ये गिरी है नेठूवाला गांव में। एक बार इस साइड से आके पैन करके दिखाइए। हालांकि ग्रामीण पूरे रात को दहशत में आ गए थे, क्योंकि एक के बाद एक 6 से 7 धमाके सुने गए। लेकिन ये जो था, ये तीसरे धमाके के बाद, मतलब 2 धमाके के बाद जो ग्रामीण बता रहे हैं कि वो अपने छत पे आ गए थे। वो देखने लगे कि आखिर क्या हुआ है। आसमान में उनको देखा कि कुछ रॉकेट जैसा है जो टूट रहा है और एक बड़ी सी लाइट जो है वो गिर रही है। लोगों को समझ में नहीं आया कि ड्रोन है। हालांकि क्योंकि हालात काफी तनावपूर्ण है, तो उसको लेकर सारे ग्रामीण जो हैं वो सतर्क रहते हैं। सारे ग्रामीण सतर्क थे। ऊपर से कुछ लाइट वाली चीज गिर रही थी। उसके बाद कुछ लोग घर के अंदर चले गए कि अगर कुछ गिरेगा भी तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है सिविल डिफेंस के लोग, और हर गांव में जो है वो मॉकड्रिल कराई गई है। कल ही रात को मॉकड्रिल कराई गई थी। उसके बाद क्या है, हाँ, इस धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी है। अमृतसर शहर में भी सुनाई दी, जबकि वहां से दूरी जो है 14 से 15 किलोमीटर, ये मुख्य शहर से 14 से 15 किलोमीटर दूर का इलाका है। मैं खुद वहां पर जगा हुआ था जैसे ये धमाके की आवाज आई। हालांकि सूचनाएं गलत सलत फैलाई जा रही थी, क्योंकि मैंने खुद वहां पर सीपी को फोन किया तो उसने मुझे बताया कि नहीं, अमृतसर के अंदर ऐसी कोई खबर नहीं है। मैं क्रॉस चेक करने के लिए एयरपोर्ट गया था, वहां पर कुछ नहीं मिला। हाँ, एहतियातन ब्लैकआउट जरूर कर दिया गया था पूरे शहर को, और करीब 4 बजे के आसपास फिर से बिजली जो है वो रिस्टोर कर ली गई थी शहर में। तो ये पूरा जो इलाका, ये पूरा जो प्रकरण है, उसका जो सबूत है, ये हमें सुबह मिला। सुबह जब ग्रामीण अपने खेतों की ओर आए तो उनको पता चला कि ये जो खेत के अंदर मिसाइलें गिरी हैं, और ये 1-2 नहीं गिरी हैं, मतलब जो मलबा है मिसाइलों का, ये 1-2 जगह पे नहीं गिरा है, कई जगहों पर गिरा हुआ है। जैसे एक मलबा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर मक्खनविंडी गांव से। ये मक्खनविंडी गांव है, यहाँ पर एक मलबा पड़ा हुआ है। इसके बगल में जेठूवाल गांव है, वहां पे दूसरा मलबा पड़ा हुआ था। और उसी तरीके से लोगों के छतों पर टूट टूट के दूसरे सारे जो हिस्से हैं वो पड़े हुए थे। जो दूसरे हिस्से पड़े हुए थे वहां पर आई थी पुलिस, क्योंकि पंजाब पुलिस की जो स्थानीय चौकी थे उसको लोगों ने इन्फॉर्म किया। तो पंजाब पुलिस की जो स्थानीय चौकी थी वहां से पुलिस आती है और वहां से टुकड़े उठाकर ले जाती है। लेकिन क्योंकि अभी भी कई जगहों पर टुकड़ा पड़ा हुआ है, जो ग्रामीण निकलते हैं, खेतों की ओर जाते हैं, बड़े बड़े खेत हैं, तो जब काम करने के लिए खेतों की ओर जाते हैं तो वहां पर दिखाई देता है। जैसे कि मैं गया था जेठूवाल गांव में, वहां पर मिसाइल मिलने की सूचना थी। मैं जैसे वहां पर गया, किसी दूसरे आदमी ने मुझे सूचना दी कि बगल में मक्खनविंडी गांव है, वहां पर मिसाइल का टुकड़ा अभी भी पड़ा हुआ है। दौड़ते हुए मैं जब यहाँ आता हूं तो देखता हूं कि यहाँ 3 फीट के आसपास की जो मिसाइल का टुकड़ा है वो पड़ा होता है। धीरे धीरे यहाँ भीड़ जमा हो जाती है। पंजाब पुलिस का जो एक आदमी था, जो पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स थे, मेरे ख्याल से एक वो सिंगल स्टार थे, SI रैंक के होंगे, तो वो जो है वो यहाँ पर आते हैं और
उसके बाद अभी लोगों को यहाँ से अलग कर दिया गया है, लेकिन ये पूरा का पूरा मिसाइल का टुकड़ा यहीं पर पड़ा हुआ है। एक बार फिर से मैं आकाश को बोलूंगा, हालांकि वो लगातार ये तस्वीरें दिखाई रहे हैं, ये तस्वीरें दाएं बाएं मतलब चारों ओर घूम के दिखा दे रहे। पीछे ये जो पीछे का हिस्सा है, मिसाइल के पीछे का हिस्सा है, ये करीब 3 फीट के आसपास का हिस्सा है, आप देखेंगे। और भी जो आगे के हिस्से थे वो भी कहीं ना कहीं जो है वो पड़े हुए हैं। तो ये अंदर तक, क्योंकि ऊपर से गिरा है और फोर्सफुली गिरा है, तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि अंदर तक ये जगह करके गया है। करीब इसने जो है 2 से 2.5 फीट का जो गड्ढा है, 3 फीट के आसपास का जो गड्ढा है, वो उसने जमीन में बना दिया है। ये पूरी मिसाइल जो रात को गिरी थी, धमाके की आवाज आई, शुरू में तो नहीं पता चला। हालांकि एहतियातन पूरे शहर में और आसपास के इलाके में, मतलब जो ग्रामीण इलाका है, जिस इलाके में ये जो मक्खन विंडी इलाका है, इस इलाके में भी और जो बगल का इलाका है वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया था। बिजली नहीं थी, लोग सतर्क थे, लेकिन ब्लैकआउट के बाद जो है और जब सुबह लोग आते हैं तो ये तस्वीर देखते हैं। इस ये जो मिसाइल है इसकी तस्वीर देखी जाती है। हालांकि अलर्ट पर हैं सारी हमारी जो एजेंसियां हैं, यहाँ पर लगातार जो है वो गश्त लगाई जा रही है। पंजाब पुलिस, मैं खुद रात को गया था, तो यहाँ आपकी जो ट्रैफिक है एसपी हैं अनु, वो मुझे रात को मिली थी, रात के करीब 3-4 बजे। वो भी अलर्ट पर, उन्होंने बताया कि देखिए अभी ऐसी कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन हाँ धमाके की आवाज़ सब लोगों ने सुनी थी, चाहे होटल के लोग हो या फिर ग्रामीण लोग हो या फिर बाहर खड़े लोग जो उस समय रात को कहीं ना कहीं जा रहे थे। ब्लैकआउट कर दिया गया था, लेकिन हाँ आवाज़ दूर तक सुनाई दी थी, कंफर्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक धमाका लाहौर में भी हुआ था, तो लाहौर भी यहाँ से करीब है और रात को आवाज़ बहुत तेज़ फैलती है। तो सुबह सुबह तक ये भी खबर। That's a live report. In fact, Republic, the first channel to break the story, and we are live there. And I see that rest of the Indian media is now trying to follow Republic TV and our big news break on the interception of the Pakistani projectile. Eyewitnesses in Pakistan, in Amritsar and the border, confirming that they heard at least 6 to 7. Look at that. Okay, those are more pictures coming in. More pictures coming in as pictures are taken in that particular area. We are reporting live. These are live images, ladies and gentlemen. Once again, I'm repeating, we are reporting live from the location where the projectile was intercepted. It fell, and this is technically in Amritsar. There were at least 6 to 7 sounds that were heard over the skies of Amritsar. 6 to 7 sounds and videos from CCTV confirming that these projectiles fired by Pakistan were intercepted by our missile defense systems, and these Pakistani darts failed to reach anywhere, let alone hit any target. So this is a field, an